तो ओवरलैपिंग सीपीआर का टाइम अवॉइड करना चाहिए, नहीं अवॉइड करना चाहिए सर। व्हेन देयर इज एन ओवरलैपिंग सीपीआर वी हैव टू अवॉइड द ट्रेड अनलेस एंड अंटिल मार्केट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक द R1 और द S1, ठीक है, और एनी प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, सस्टेन नहीं होता, तब तक कोई ट्रेड नहीं करता, ठीक है। रेंज में आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? इट हैज टू ब्रेक प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई, एंड दैट हाई एंड लो शुड बी ओके like below or above than S1 or R1. Is that clear? So that's what we are going to discuss. Okay. So if you compare the CPR also, that is an previous to, like if you compare this today's CPR, okay, based on previous day CPR, what we call it as an, क्या बोलते हैं इसको? Wider है? This is a wider CPR, right? So we know the market can be sideways. Okay, compared to yesterday, market will be sideways, isn't it? वही हुआ आज, सेम कॉन्सेप्ट था. So that's how we have to trade. Today only we have got only one trade in the index. बाद में कोई ट्रेड नहीं बना. ठीक है, no setup, no trade. Look at this. So I was trading between here and here. There is no trade at all. This is the one single trade we had. या तो नीचे से बाई कर सकते थे या तो ऊपर से like 3 minute time frame कोई भी कैंडल देके we would have short. Okay. चलो. So now the things I have to cover today, that is an ascending and descending CPR, right? Ascending descending CPR with the trend reversal sign. Is that clear? ठीक है. तो लेट मी चेक एनी स्टॉक टुडे. एशियन पेंट में डिसेंडिंग सीपीआर बना था पर मार्केट ऊपर गया. ओके, लेट्स मी आधा एग्जांपल. एशियन पेंट हाँ सर, जिंदगी कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं. वेट अ सेकंड. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. थोड़ा सीपीआर आने दो. Okay, so look at this. What was the concept here? So you can able to see clearly, okay, clearly there is an downward CPR. Is that correct? There is an downward CPR. That means what? We are going to go for a sell side. Concept clear है? We are going for the sell side rather than buy side. Correct है? Done. तो अभी यहाँ पे देखो, look at the first candle. This was a big candle. Do you think that is a good trade? Do you really think? No, right? So here, what would you would have planned? You would have planned for a pullback trade, isn't it? Pullback plus rejection or any our pivot levels. सही बात है. The rejection can be around previous day like low point, or it can be previous day closing point. Both are same here, right? नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया. Then here, this has, if you would have drawn Fibonacci level, can I draw? Can I show you on my screen? Look at this. I'm going to draw up from here. That is a previous day high. Okay, this is today's ka low point. What do you think? It has took rejection from 38.2 level exactly. What do you say? बोल सकते हैं? Look at my screen here. So I have to maximize the screen. Okay, now look at it. Okay, आपको rejection मिला. Okay, so what we are going to see, if we are entering the trade on any rejection candle at any of CPR levels, right? What should be our target? What should be our target? Next CPR level. Is that clear? If any candle closes below that level, all levels, okay, then we can plan for the day low. That also got broken. We can plan for this CPR. Okay, done है. तो अभी यहाँ पे देखो concept क्या है. When we have to go for buy side, okay, here we can buy, but as per this setup, we should have followed our rule that in downward CPR, I am not going to buy. Rule number 1. I will only buy when the price start trading above the CPR plus the R1. Then only you will get the like short movement, like what we say, one side movement. Clear है? जब भी डाउनवर्ड सीपीआर में आप ट्रेड करते हो, ऑलवेज ट्राई टू एंटर बाय ट्रेड, इनिशिएट बाय ट्रेड, ठीक है, जो आपके सीपीआर के ऊपर हो और R1 के ऊपर निकल जाए, ठीक है, और प्रीवियस जो भी स्विंग है उसको भी निकाल दो, तो सबसे बड़े रेट बनता है. ओके, दिस काइंड ऑफ सीपीआर, दिस काइंड ऑफ मार्केट यू विल सी ओनली वेरी रेयर. ओके,
So we don't want to trade a rare market, right? We have to trade market on daily basis. So always follow setup what we have taught. Is that clear, everybody? ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? I will tell you the one more reason. There was a Fibonacci extension. Fibonacci का वहां पे आपको resistance मिलेगा. +1. There was a previous day low. The price might would have taken a resistance from previous day closing point, isn't it? Closing plus low both are same here on Asian Pi. You could have taken rejection, right? If you have gone for the buy side, you know there is a swing over there. If I draw a trend line also, I will show you on my chart like this way. If I drawn like this way also, I wouldn't have gone because my risk to reward will be not matching. Okay, why? Because I will show you here. अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो आपका एसएल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे लगा सकते हो आपका एसएल. Here can keep a or SL, isn't it? Or the CPR levels, right? So there is an previous day closing point. So if I keep my SL here also, is it a good trade? Please let me know. Is it a good trade? What is the guarantee the price can move? कोई guarantee है क्या? भाई वहां तक जा सकता है? No, right? No. So always avoid this kind of setup in CPR. Okay? जो CPR बना है वो ट्रेंड फॉलो. ठीक है? अगर आप देखोगे, if you look, see, there was an R1, sorry, क्या बोलते हैं इसको, R3. Can you able to see R3 is lying between the CPR, right? So this was a trend reversal. Means what? If market is going from downside to upside, it will rejection from the that. अगर ये momentum morning आ गया होता, okay, if this momentum would have came at morning itself, okay, we would have planned a sell side perfectly over there on rejection candle. Is that clear? यहाँ पे हमारा R3 लगा हुआ दिख रहा सबको यहाँ पे. This was like red line. This was our R3. ठीक है? So that we have to plan. When there is an descending CPR, we have to buy any stock or any index only and only above previous day swing or at any CPR R1 level. वो निकलेगा, बाय करें. ठीक है? सेल कब करना है? अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा है, wait for it. Wait for the pullback at any Fibonacci levels or any CPR levels. If you get the rejection, go for it because the stop loss will be very small. ठीक है? रिस्क हमारा छोटा हो जाएगा. Okay? Like probability of a profit will be higher. ठीक है? तो आप फोकस पे रखना. ठीक है? अगर असेंडिंग बना है तो वी हैव टू गो फॉर द बाय साइड rather than sell side, right? Sell side after breaking the S1 support. Is that clear? So now look at this in Nifty chart. Yes, Adana is booming. It will go upside more. Why my net is slow today? It is taking so much of time. Okay, look at this. Again, would have gone for the buy side as we have taught you already. We have to go for the sell side only after breaking the CPR levels. That is an S1. Okay, because why? There is an previous low also is there. So let me know which is the safest side to go for the sell side here in this kind of in like CPR. कहाँ पे आपको अच्छा लेवल है for go for sell side with confidence? कौन सा लेवल है? Can I say this is the level that is a previous low point? Why? Because our S2 S1 is lying over there. ठीक है? तो हमारा जो सपोर्ट 1 है CPR का, उसका और प्रीवियस लो में ज्यादा डिफरेंस ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, राइट? So we have to initiate our trade only below this for the sell side. Or rather, we can go for the buy side after any confirmation over here. Is that clear? आपको कैसे प्लान करना है ट्रेड एज पर CPR? ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है आपको? You would have gone for the buy side again on this candle. Okay, this also I have did today. Can you able to see the mark on my chart? Green line. That is my today trend in the Nifty. I waited for it. The price to come on like my level. It came exactly to CPR levels. I bought it with a very small stop loss. Okay, and I booked my profit around this CPR level. That's it. Simple as that. ठीक है? कल जो सेम ट्रेड में हमने लिया था फ्राइडे को, हमको क्या हुआ था? लॉस हुआ था, राइट? वी हैव फॉलोड आवर सेटअप. फ्राइडे को हमारा लॉस हुआ, राइट? Stop loss we have taken, but today convert to profit. Understood? So that's how we have to always follow setup. Profit and loss doesn't matter when you follow setup. Okay, if setup is good, automatically profit will come. ठीक है? Done it? हाँ, green support है. ठीक है?
So now can we discuss about swing trade now? We are going to discuss now swing trade based on monthly CPR and the weekly CPR. Is that clear? So have a one pen and notebook with you all. ठीक है? सबके पास ready है? If it is ready, so I will move ahead. It's very important. Okay? Don't skip this topic. आज बहुत लोग कम है आज क्लास में भाई. क्या सब लोग चले गए क्या बाहर? ऐसे छोड़ रहे यार. तब भी यार. Just give a moment. ओए, एसी ऑन करना. Hey guys, I will come back in 1 minute. बाईस ओके चलो स्टार्ट. सो गए ठंड के मौसम में. अच्छा ठंड है क्या? वो क्या बात कर रहे हो? ये तो पसीना टपक रहा है. देखो हमको बैठे बैठे. नॉर्थ इंडिया आ जाओ, यहाँ बहुत ठंड हो रही है. अच्छा सही है. इधर सर, इधर ही सर. टॉपिक. ओ वाओ सर. Have a big claps for the work. Brush sir is asking the topic. Wow. सही है. कैसे कैसे आते हैं क्लास में बताओ. CPR we are discussing, right? Brother, we are discussing from last 3 classes. And now you are asking, huh? Okay. Don't be late, guys. चलो अब हम लोग चालू करते हैं. ओके, आपको क्या करना है? So go for indicator section. Okay, and here type CPR. Can you able to see CPR with pivot levels CPR by kgs? क्या सबको दिख रहा है यहाँ पे? 1778. Yes. Okay. Click OK on it. ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा. ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पे सेव में ओपन कर देता हूँ CPR. Let me remove the drawings. Okay. So go to the settings. आपको सेटिंग पे जाना है. ओके, गो फॉर a setting. यहाँ पे ठीक है, disable everything. Okay, disable everything. Only just click OK on show weekly pivots, show previous week high and low. Is that clear? Everybody, just click on disable everything here. What you are going to see. Okay, just click on show weekly pivots, show previous week high and low. Why? Because we are using a weekly CPR. Okay, then come to the style. There you have to disable everything. Just enable weekly pivot, weekly BC. Okay, weekly, that is a bottom central, top central and the pivot. Is that clear? The same as CPR. जो CPR था intraday use करते थे, same concept on the weekly also, right? That is in CPR, 3 line CPR, then R1, R2, R3, S1, S2, S3, then have to enable previous week high, previous week low. Okay, for confirmation. Is that clear? And you can accordingly put the color how you like. For resistances, make it as a red. Okay, for any support, make it as an green. Okay, or any previous week high and low, make it as some different color which are going to remember very easily. Okay, done. Clear? So I am using yellow as a previous week low, sky blue as a previous week high. Okay, because that was in my mind always. When I see like yellow line, that means a weekly low point. If I see a like a sky blue, okay, so I have used to it, right? So you also have to do like that. जो आपको कलर दिखेगा आप उस पर स्टिक रहो, तो आपको दिमाग में जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, डन है. Let's move then. So here what is the concept? In intraday we was going to enter on the 5-minute time frame, right? 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 15 minutes, based on the CPR concept, isn't it? So here the concept will remain the same, but time frame
time frame should be, if you want to enter, okay, for intraday, okay, for intraday, at least wait for hourly candle to sustain on ABC, any CPR levels. Is that clear? अगर आपको इंट्राडे में लेना है, because intraday you cannot use this CPR, okay, but for reference we can use that. What is the point? From there we can enter for the momentum trading. Okay, so let me know any stock name. I will show you with the best example to you. So which should I take? Adani? Naukri? Dixon also take. Okay. लगता है सबको डिक्सॉन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो डिक्सॉन ले लेते. चलो डिक्सॉन. Just wait for a while. Let it come. The CPR levels on the chart. I think my net is slow or my trading is slow today. Can you able to see the marking levels on my chart? Entry levels as per the Fibonacci level. सही है, बढ़िया था. So now look at the concept here of the weekly CPR. How would I have drawn? How would I have entered? Okay, and how we can select a stocks for a swing trade. Okay, so what do you think? What type of CPR it is compared to previous? It is a weekly CPR. Okay, whenever we are like trading in a weekly CPR, at least we have to wait for the hourly candle to enter. Okay, above the price of the R1. Okay, is that clear? ठीक है, for swing trading I'm telling, not for intraday. अब यहाँ पे देखो, compare the previous CPR to the current week CPR. What type of CPR it is? Please let me know, everybody. Yes, ascending plus narrow CPR. That means what? This stock in this week can be a good momentum. Whole week it can be good momentum. Momentum can be any side, upside or downside. It doesn't matter. Just we have to look at price action plus the levels of the CPR as per the Fibonacci ratio. Okay, you can combine the both. You'll get more like better results. Is that clear? So here, as I said you, whenever price like crosses, it will take support from the CPR levels. We no need to go for the sell side, right? अब यहाँ पे देखो हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है? For swing trade, where will be my entry? Can I say my entry will be based on this candle above the CPR? जब उसके ऊपर निकलेगा यहाँ पे हम लोग एंट्री मार सकते हैं, राइट? क्लियर है? देखो आप ये बोल सकते हो सर देयर इज एन प्रीवियस स्विंग इज देयर, राइट? यहाँ पे प्रीवियस स्विंग आप बोल सकते हो. यस, प्रीवियस स्विंग इज देयर, but if you look at the volume which was coming on first candle, second candle, you can compare that also, right? Look at this. यहाँ पे क्या वॉल्यूम था आपको? Are you finding any volume over whole trading period? यहाँ पे on hourly candle दिख रहा है आपको वॉल्यूम किधर भी? No, right? On this candle have you got the good volume? On this candle compared to whole these candles? Okay, right? And the volume also has got broken EMA. ठीक है, आपको वॉल्यूम में दिख रहा है लाइंस? Can you able to see the lines on the volumes? That is an EMA line. ठीक है, तो उसको भी उसने ब्रेक कर दिया. So we can go for the swing trade, right? Here we have entered. What's our target? Our target will be at least minimum of the, oh, I'm using a short side trade, sorry. इसके ऊपर ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस ए में रखूंगा मैं फॉर स्विंग ट्रेड. ओके, माय टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस CPR, द सेकंड विल बी दिस CPR. ओके, इज दैट क्लियर? एंड इफ यू वांट टू ट्रेड फॉर इंट्राडे, देयर इज सम टेक्निक यू हैव टू यूज इट. सर पर सेकंड वाला वॉल्यूम लेस से फर्स्ट वाले से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. हमको देखो कभी कभी क्या होता है ना, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है ना, मोमेंटम में आता है. वॉल्यूम हमेशा मोमेंटम में आता है. ठीक है, आप कंपेयर करो प्रीवियस में कोई भी कैंडल में इतना वॉल्यूम आया था क्या? नहीं आया था. जब वॉल्यूम नहीं आया इस कैंडल पे आगे, क्या उसका हाई ब्रेक हो गया क्या? यू गॉट डबल कंफर्मेशन. व्हेन द हाई हैज गॉट ब्रोकन, देन द वॉल्यूम विल कम द मार्केट.
बट माय पॉइंट, यहाँ पे वॉल्यूम था, सेकंड में कम आया, जब सेकंड में कम आया कोई दिक्कत नहीं, उसका हाई ब्रेक हो गया, फिर थर्ड वाले में ज्यादा आ गया ना, समझ रहे हो? तो वॉल्यूम ऐसा काम करता है. हाउ डू यू लाइक ट्रेड यू पीपल? व्हेन यू आर ट्रेडिंग, सो बाय एट एनी प्राइस, प्राइस इज गोइंग अपसाइड, द मोर पीपल एंटर, राइट? ज्यादा लोग उसमें एंटर करेंगे, राइट? तभी तो वॉल्यूम आएगा. तो ये भी ऐसे ही काम करता है. ठीक है, चलो. So there's one technique for it. If you want to go for intraday, okay, you can use weekly CPR. Okay, can we able to see the blue line? It is an previous week high point. Okay, previous week high point. If you want to do intraday, na, this in this kind of CPR, you can do it. Come to 15-minute time frame. Okay, let's wait for the 15-minute candle to close above previous week high point. Is that clear, everybody? At least 15 minute आप wait कर लो. कोई भी index, कोई भी stock, that should sustain. Okay, if it coming from downside, if any 15-minute candle closes above the previous week high, go for the trade. Long side, here stop loss will be the second place. Okay, target for CPR, then second CPR. Okay, if you're doing intraday, you have to exit your trade at 350. So also good trade, isn't it? So also good trade, कोई issue नहीं, right? So the concept will remain the same. समझ में सबको? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. इसमें भी पूरा असेंडिंग, डिसेंडिंग, नैरो, वाइडर. ओके, देन व्हाट वी से, ओवरलैपिंग सीपीआर. ओके, इनसाइड सीपीआर, आउटसाइड सीपीआर, ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर. सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बट टाइम फ्रेम विल बी डिफरेंट टू एंटर द ट्रेड. इज द क्लियर पॉइंट? समझे सब लोग? क्या बोलते हो? आई विल गिव सम मोर स्टॉक्स. ओके, काम करो, कुछ और स्टॉक बताओ. गाइस, देयर इज ए नो चार्ज फॉर रिप्लाइंग. क्या सब लोग सो रहे हो क्या क्लास में? आई एम मेकिंग यू बोरिंग? Then please do reply, na? When I'm asking something, please do reply, right? Then only I will get to know समझ में आया नहीं आया. Okay, स्टॉक का नाम सब बोल रहे हो, जब मैं पूछता हूँ समझ में आया क्या, कोई नहीं बोलता. क्या करो बताओ? समझ में आया सबको? Yes, only one S, only two S. देखते कितने S आते हैं अभी. समझला? साहिल कुमार, नो. ओके, ओके ब्रदर, then I will explain one more time, no issue. Okay, जितनी बार पूछे उतनी बार एक्सप्लेन करेंगे. ओके, लुक एट द सेम पॉलीकैप. ठीक है, हाँ लेंगे लेंगे, आलकेम भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. आपको दिख रहा है स्विंग ट्रेड मोमेंटम कैसा मिलता है इंट्राडे में? इफ यू वांट टू ट्रेड आल्सो, व्हाट काइंड ऑफ सीपीआर इट इज? पॉलीकैप, लेट मी नो. अपसाइड सीपीआर, ascending CPR, right? Plus little bit narrow CPR compared to previous week. And what I said to you, if on previous week, do you remember the intraday rule for the narrow CPR? If narrow CPR doesn't give a momentum on that day, it should have to give on next day compulsory. Within 2 days, it has to move. Either side, big momentum should have to come. Remember point? Everybody? सबको याद है? Yes. Same applies to weekly CPR, monthly CPR also. Isn't it? In spite of a narrow CPR on previous week, we didn't gotten like trending momentum on the polycap stock. That means it can give momentum on the current week. Isn't it? Clear है चीजें? सही है? Yes. So here, if you want to enter a trade, can I enter a safe trade after waiting hourly candle? Can I enter over there? यहाँ पे एंट्री मार सकता हूँ. ऊपर गया कैंडल, ऊपर जाकर क्लोजिंग भी दे दिया. ठीक है, इसके ऊपर भी एंट्री मार सकते हो या फिर पुल बैक पे एंट्री मार सकते हो, राइट? सो लेट्स टेक ए एंट्री ओवर हियर ओनली. ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कैंडल को लो पॉइंट. ठीक है,
So for swing target, I can keep up to this. No issue. You will reach the target. One. सर पता नहीं आरएसए का भी नहीं, आरएसए हटा दो ना, रिमूव आरएसए। अब आरएसए मत देखो ना, सीपीआर देखो। अब आरएसए अभी तक मैंने लगता है क्या मैं आज सिखाया हुआ है फॉर दिस बैच। आई हैव टेकन द लास्ट संडे। आई डोंट नो इस बैच वाले थे या नहीं थे क्लास में, बिकॉज इन दैट बैच आल्सो सम ऑफ द स्टूडेंट व्हिच आर इन दिस बैच। सही है ना, थोड़ा इसमें है थोड़ा उसमें, ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस ले लेंगे। ठीक है, नो इश्यू, आई कैन टेक इट अप वन मोर टाइम। आप यहाँ पे समझो, ठीक है। लाइक लुक एट दिस। नहीं नहीं, इसमें देखो हमारा एंट्री, हाँ वही तो बता रहा हूँ, R1 क्रॉस में से पहले एंट्री होगी। क्यों होगी? कैन यू एबल टू सी प्रीवियस वीक हाई पॉइंट? साजिद साहब आपको दिख रहा है? कोई भी स्टॉक अगर प्रीवियस वीक का हाई क्रॉस करता है, सस्टेन होता है, देन दिस R1 डजंट मैटर। दिस अप्लाइज टू ऑन डेली सीपीआर ऑल्सो। डेली सीपीआर में आपको सेम करना पड़ेगा। अगर वहां पे प्रीवियस डे का हाई पॉइंट है, उसको प्राइस क्रॉस कर दिया है, 5 मिनट का सस्टेन हो चुका है, एंटर। स्टॉप लॉस विल बी द कैंडल लो इटसेल्फ, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट। ओके, वी कैन हैव ए लुक फॉर द टारगेट ऑफ 5800 पॉलीकैप। ओके, वी माइट अचीव द टारगेट विद इन 1 वीक, दिस स्विंग ट्रेड सेटअप। ठीक है, इफ यू वांट टू एंटर एनी पुल बैक, सो कैन आई मार्क इफ यू आर गेटिंग एनी पुल बैक? अगर एक कल क्रॉस हाई नहीं होगा, ओके ये वाला अगर हाई क्रॉस नहीं होगा कल, कैन आई मार्क द फिबोनाची लेवल्स लाइक दिस? If you are getting a support at either of any this level, can I go for the buy side tomorrow again on this same stock? What do you say? You don't have to go for sell side until and unless the price is going to break this Fibonacci levels plus the previous big high point also is there, isn't it? So that's how we have to plan the trade. So now let me open the same chart into intraday time. If anybody want to do intraday, can I wait for 50-minute candle to sustain above that level? बोल सकता हूं? Yes, initiate the trade. Long position above this, I can enter. Stop loss will be this candle or this swing. I can take my target up to next CPR levels. Isn't it a good trade? Correct? Let me show you one more point. Alchem stock. Go for Alchem. Okay. It is in, today it has came down. If I come for weekly CPR, let it come. Let's wait for it. Okay. Okay. So now let me know everybody what kind of CPR it is. कौन सा CPR है? आने दो इसको एक सेकंड। What is CPR? Downward CPR? Ascending CPR. Perfect. Perfect. Ascending plus narrow CPR. Sorry, wider CPR. ठीक है? अभी what should be your strategy? Let me know. If you are looking for a weekly CPR, if you are planning for any stock to buy on the dip, what is the best trade you can initiate? Everybody? Yes? Participate? कहाँ पे यहाँ पे आप इनिशिएट करोगे? What can be the good strategy here? No? No, sir. That is wrong answer. Wrong answer. No, that is a breakout trade, guys. That is a breakout trade. What I said, like taught you in intraday CPR, when there is ascending CPR, always try to buy at the bottom. Don't go for sell side. Sell is only after breaking the previous week low point, after hourly candle sustain or 50-minute candle sustain for intraday purpose. ठीक है? Clear है? If you are getting the price near the S1, go for the buy side. क्या आपको मैंने सिखाया नहीं इंट्राडे में? Try to buy at S1 level if you are finding the price dipping on the ascending CPR. Clear है? आपको यहाँ पे इनिशिएट करना है बाय ट्रेड आफ्टर गेटिंग कंफर्मेशन ऑफ एनी कैंडलस्टिक पैटर्न.
कैन 50 मिनट, इट कैन बी हावर. ओके, कोई भी हो सकता है, नो इश्यू. If you go for swing trade, then wait for hourly candle. If you are going for intraday, then wait for 50-minute candle. Is that clear? Why? Because यहाँ पे देखो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा. ठीक है, बहुत छोटा रहेगा. So if I draw Fibonacci also, let me show that also. Can I mark the levels like this? कर सकता हूं. Yes. यहाँ पे भी हमारा लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे हमारा और एक सीपीआर का लेवल है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट भी. इफ आई एक्सटेंड माय सीपीआर, व्हाट वी से, दिस लेवल ओवर देयर, कैन आई गेट अ सपोर्ट नाउ? वी हैव टू फाइंड अ बेस्ट सपोर्ट पॉसिबिलिटी वे. कौन सा बेस्ट सपोर्ट हो सकता है? ठीक है, सो वी हैव टू मिक्स अप एवरीथिंग फॉर डबल कंफर्मेशन. ठीक है, डन है. तो अगर आपको स्टॉक सर लाइकवाइज वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू क्रॉस R1 टू प्लेस एनी बाय ऑर्डर्स, कैप्चर द अपसाइड मोमेंटम. देखो भाई मैं आपको बताता हूँ. देखो हमेशा आपको दिमाग में क्या रखना है, वी हैव टू कीप रिमेंबर द ओनली पॉइंट दैट इज S1 R1. ओके, दैट इज ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकडाउन, रूल नंबर 1. सेकंड आपको क्या देखना है, इट इज एन असेंडिंग सीपीआर, डिसेंडिंग सीपीआर, नैरो सीपीआर और वाइडर सीपीआर. ठीक है, अगर असेंडिंग सीपीआर है, ट्राई टू बाय एट S1. ओके, सेल ओनली when the price sustain below the previous week or previous day low point based on the CPR you're using. If you're using the intraday CPR, then wait for like price to break the previous day low plus the S1. If you're using the weekly CPR, then wait for price to break and sustain below previous week low point or the S1. जो भी सबसे पहला नजदीक आएगा, जो रिलेवेंट होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे. ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू बाय. ascending CPR is there, always try to buy at previous day low or previous week low. ठीक है, or any S1 level. Okay, the short covering momentum we are going to see after breaking the R1 or the previous week high. Is that clear now? ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अभी समझे आपको क्या फोकस रखना क्या नहीं? Got it? Okay, perfect. तो अभी if you are getting the Alchem stock, okay, for swing trade, you can go for bindas buy side here. Place the stop loss here based on hourly candle closing. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट है. Okay, it can go still upside. So if I mark the targets for there based on the Fibonacci extension, can I mark like this? Okay, so my target can be after crossing this level. Okay, if I place my target, it can be this level. So when the 78 level has got broken, okay, we would have seen the CPR, the price can come at 161.8 level. Before that, have to check 138.20 level. हम Fibonacci. ठीक है, वो कहाँ पे आता है? लगभग यहाँ पे आया हो. ठीक है, वहां पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, डन है. सो एनी अदर स्टॉक चले शो, कुछ और स्टॉक बताऊं? अभी बता दो. HAL, इसका तो अपसाइड सीपीआर बना होगा सब में. जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकंड रुक जाओ. तो गाइस, एक कौन सा सीपीआर बना है? बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. अपसाइड सीपीआर, upside CPR, ascending CPR, ascending CPR. Whenever the price has like start trading like compared to previous week high point, momentum मिला, ब्रेक किया, momentum मिला. ठीक है, अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. ठीक है,
उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं अगर प्राइस सस्टेन होता है, ठीक है, बड़ा गॉन फॉर बाई साइड, जा सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड पर। बट ऑलरेडी प्राइस भाग चुका है, राइट। यहाँ पे देखो आपको क्या देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखो इफ एनीबडी वांट टू वेट फॉर द पुल बैक, दे आर नॉट गेटिंग एट सीपीआर लेवल्स। क्या आपको दिख रहा है सीपीआर लेवल्स पे? आर यू फाइंडिंग एनी सीपीआर लेवल्स पुल बैक? नो, राइट? नो, नो, here also no. We might get, we might not get, but the best option to go for the trade, to minimize the risk, to wait for the dip at the CPR levels. Is that clear? ठीक है, यहाँ पे बैक टू बैक अपर सर्किट मार रहा है एचएल, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करो आप, संभल के ट्रेड करो, थोड़ा पुल बैक को वेट कर लो। ओके, व्हाट इज ओ डब्ल्यू डब्ल्यू? अच्छा हुआ वहां पे आपने ये नहीं लिखा, डब्ल्यू की जगह एल नहीं लिखा, वरना इसका मतलब उल्टा हो जाता, समझ रहे हो? सर जो पहली बार सीपीआर की क्लास लग रही है, ये क्लास उनके लिए है। सर जो पहली बार सीपीआर क्लास गा रही है, क्लास उनके लिए है। अच्छा साहिल सर, डू यू नो एवरीथिंग अबाउट सीपीआर? तो फिर is there any rule that if you people know the CPR which I taught in earlier like last batches, you are know everything? बताओ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप वेट करो डिप डिप करने का। सो लेट मी नो, कैन आई से दिस प्लस द ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर आल्सो इज लाइंग ओवर देयर? क्या बोलते गाइस? कैन यू एबल टू हैव ए नोटिस? आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज एन S3। हम्म, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अच्छा हाँ, हाँ तो देखो ना फिर चार्ट पे क्या दिख रहा है। सबको बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, नोटिस कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे नाम, मैंने नाम हटा दिया है, ठीक है, सिर्फ लाइन है। मेरे को मालूम है यहाँ पे S3 S4 है, R3 R4 है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, दिस एन ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर। अगर मेरे को यहाँ पे मिला, दैट इज एन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। हो, हाँ सर, ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर मीन्स व्हाट, व्हेन नेवर, ओके, S3 अगर सीपीआर के बीच में है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, देयर इज हाई चांसेस द प्राइस विल टेक द सपोर्ट, ओके। इफ देयर इज एन असेंडिंग सीपीआर, a descending CPR also it will work, okay। Ascending or descending go doesn't matter. If you are finding the S3 between the CPR, that is then price might take the support, right? If price is coming from downside, if you are finding the CPR over there, if R3 is lying in between CPR, that will act as a resistance. It can be weekly CPR, it can be monthly CPR, it can be anything, ठीक है, डन है, ओके। सो आई हैव वन स्टॉक इन रैडर, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किधर कह रहे हो? ओ नहीं, सॉरी। मोदी ट्री, ओके। तो दिस स्टॉक वाज इन माय radar फॉर माय स्विंग ट्रेड, बट आई हैव मिस्ड, इसको मैंने मिस कर दिया, ओके। बताता हूँ, लुक एट माय एंट्री। मेरा एंट्री कहाँ पे था? मेरा एंट्री यहाँ पे था, here it was my entry was, that is a 169। so where is the price now? Almost 15% from the buying level, ठीक है। तो ये मैंने कैसे, मैंने देखो यहाँ पे कैसे एंट्री बनता, हाउ आई हैव मार्क्ड इट। It is not only a like CPR, you have to use a common sense also, okay। so can you please able to, okay, focus on the volumes? सबको दिख रहा है यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन? सर इज सेइंग देयर इज ट्रेंड रिवर्सल, सो बी कॉशियस। हाँ, हाँ ये स्टॉक्स ऊपर ही जाए, मेरा होल्डिंग पोजीशन है इसमें, इसमें मैम HCL में।
एक्सेल बोल रहे हो या फिर ये स्टॉक बोल रहे हो? ये तो ये देखो ना, ये मेरा स्टॉक था फॉर स्विंग ट्रेड, आई हैव मिस्ड एंट्री। हाँ एचएफ तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखो मेरा एंट्री यहाँ पे था। ओके, मेरा एंट्री मिस हो गया है। ठीक है, मैं लेते लेते भाग गया तो मैं भी छोड़ दिया इसको। ठीक है, मेरा एंट्री यहाँ पे था कल, मीन्स ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्री कैसा था। कैन यू एबल टू सी वीकली सीपीआर, ए व्हाट वी से, क्या बोलते हैं इसको, द लाइक सीपीआर लेवल्स हैज ब्रोकन प्रीवियस वीक प्लस R1, राइट? मैं आपको बोला था दिस ओवरलैपिंग सीपीआर। कैन आई से दिस इज एन ओवरलैपिंग सीपीआर? If overlapping CPR is there or outside CPR is there, we have to avoid the trade in between R1 and S1 or the previous week high or previous day high, previous day low. Understood? If you're using intraday CPR, wait for R1, S1 or wait for previous day high, previous day low. If you're using for weekly CPR, okay, same concept will remain same. Okay, wait for price to cross previous week high or the S1. Downside, previous week low on the S1. इज अ क्लियर माई पॉइंट? तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग का एक, सॉरी क्या बोलते हैं, एंट्री बनता था। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है चीजें, कैसे क्या एंट्री मारना है? ठीक है, इफ यू हैव एनी स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड, लेट मी नो, वी कैन एनालाइज हियर। है किसी के पास? MGL, दिस ऑल्सो इन माय वॉच लिस्ट, ये ऑलरेडी भाग चुका है बहुत। ओके, लुक एट दिस। कैन यू एबल टू सी माई परफेक्ट एंट्री? दिख रहा है सबको, बेस्ड ऑन द CPR ऑन प्रीवियस वीक। दिख रहा है लेवल, CPR लेवल्स प्लस में रेजिस्टेंस लेवल निकला, ब्रेक हुआ, एंटर, स्टॉप लॉस हियर, राइट द ट्रेड। Okay, still it can go upside. Okay, why? Because there is an like upside CPR plus it has closed above previous week high point. So tomorrow keep eye on it. Okay, plot a levels same like this. This can be your target. Okay, and if you get a pullback near the Fibonacci levels, go for the buy side. Okay. Can I say if I'm getting the pullback near 0.618, 0.5, okay, 0.382, any Fibonacci ratio, it is going to take a support, okay, and place intraday CPR. ठीक है, इंट्राडे के आप CPR लगा दो वहां पे कल के लिए। ठीक है, सपोर्ट लेगा, बाय करो, टारगेट ए ब्रेक करना सीधा, इसे हो टारगेट। ठीक है, और एल्स इफ टुमारो द स्टॉक्स ओपन गैप अप, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर ये स्टॉक कल गैप अप मार दिया, इसके ऊपर निकल गया, ओके, बिंदास गो फॉर द बाय साइड फॉर स्विंग ट्रेड। ओके, टारगेट विल बी दिस। इज द क्लियर? आराम से मिलेगा आप। ठीक है, तो टुडे आई हैव टेकन ऑन ऑप्शंस इन कमिंग सीड। ठीक है, आज मैं ट्रेड मारा था कमिंग इंडिया में। ओके, अराउंड स्ट्राइक प्राइस मेरे को याद नहीं है। ओके, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मैं दिखाता हूँ। देखो, कैन यू एबल टू सी हियर, ये परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ पे ब्रेक किया प्राइस ने, आपको दिख रहा है यहाँ पे, द प्राइस हैज गॉट ब्रोकन प्रीवियस R1 प्लस द प्रीवियस वीक हाई। कैंडल बहुत बड़ा था, आई अवॉइडेड, मैं थोड़ा वेट किया, मैं बोला थोड़ा नीचे आने, थोड़ा नीचे आने। कैन एबल टू सी द लाइन ओवर देयर ऑन माय चार्ट 1986, मैं लगा के रखा था, वहां पे आएगा मैं एंट्री मारूंगा। ठीक है, आई एंटर्ड ऑन दिस टाइम फ्रेम, प्राइस आया, आया नीचे आया, पुल बैक लिया, आई एंटर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री। तो यू कैन यूज द वीकली सीपर आल्सो फॉर एंटर, बट यू हैव टू वेट फॉर प्रॉपर कंफर्मेशन। अगर कैंडल बड़ा है तो पुल बैक का वेट करूंगा। कैंडल एक कैंडल भाग गया तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे नहीं भागना। ठीक है, ऊपर जाके नीचे आ गया, सपोर्ट लेगा, बाई करो। ठीक है, सो अंडरस्टैंड। सो कमेंस इंडिया में देखो व्हाट इज CPR। अब देखो क्या CPR है, ascending plus narrow CPR. So can I say this stock can be momentum?
फॉर होल वीक, आपको बढ़िया मिलेगा। कैन प्लान इंटरडे आल्सो दिस स्टॉक, इंटरडे प्लान कर सकते हो इसमें। अगर पुल बैक मिलेगा, पुल बैक कैन बी अराउंड दिस, go for it. Pullback can be around this, go for it, but don't plan for sell set, that's it. ठीक है, don't plan for a sell set because ascending CPR plus narrow CPR means you have to wait for the dip. Dip मिलेगा, आने दो आने दो आने दो, जहां पे कंफर्मेशन देगा कैंडलस्टिक पैटर्न का वहां पे बाय कर। ठीक है, अगर कल ए निकला, अगर कल ए निकला, बिंदास जाओ। ठीक है, अगर ए निकल गया और यहाँ पे कोई इंटरडे CPR नहीं है, एंट्री मारो, इसके ऊपर और टारगेट ले लो। ठीक है, पुल बैक आएगा, एंट्री मारो, टारगेट ले लो, बट प्लान की बाय साइड rather than सेल्स। ठीक है, डन है। सर एसएल कहाँ प्लेस करना? सर एसएल प्लेस करना आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ पे अगर पुल बैक पे एंट्री मार रहे हो तो हमेशा आपका देखो आपका एसएल क्या रखोगे, कौन सा कैंडल पर कहाँ पे रेंज है वो एसएल लगा दो। बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ओनली यू हैव टू प्लेस एसएल, राइट? अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे, ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट के बाद जो भी आपको कैंडल दिख रहा है वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, बेल का आ चुका है, बेल का टारगेट हैव केम ऑलमोस्ट लाइक 3 वीक्स बैक, 3 वीक्स बैक आ चुका है बेल का। लेट मी चेक बेल स्टॉक। डोंट नो व्हाई my head is shaking guys, हेडेक कर रहा है। ओके, सो लुक एट द बेल। सो व्हाट टाइप ऑफ सीपीआर इट इज? कौन सा सीपीआर है? Ascending CPR, perfect, plus narrow CPR. So do you think it can be a good stock for swing trade if I am getting a dip, okay, near this CPR level with confirmation? Correct, isn't it? Plus, one more point. Can you able to see a virgin CPR in weekly CPR? See, all constructing single stock. Because whole week the price has not even touched the CPR. That is a virgin CPR. So can I say, if price comes near this any CPR level, go for the buy side. Don't plan sell side. Dip मिलेगा बहुत बढ़िया, because 1 support, 2 support, 3 support, 4 support, बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत सारा सपोर्ट। ठीक है, तो आप उसको प्लान कर सकते। ठीक है, डन है। और कौन सा करना बोलो? देयर इज वन स्टॉक, मेरे को मालूम है, याद है, अब पता नहीं कितने लोगों को याद है, इसमें बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट, पता नहीं कितने लोगों ने लिया होगा स्टॉक, मैं बताता हूँ। ओके वेनेसा, बताता हूँ। सबको दिख रहा है यहाँ पे पीपीसीएल स्टॉक? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एंट्री फॉर स्विंग ट्रेड, बहुत मस्त एंट्री था। किसने लिया इसको? लुक एट हियर, प्रीवियस वीक हाई ब्रोकन, प्राइस सस्टेन, अपसाइड, फुल अपसाइड, प्रीवियस वीक के ऊपर प्राइस सस्टेन, पूरा ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे अगेन इफ यू आर फाइंडिंग एनी सपोर्ट और एनी वर्जिन सीपीआर सपोर्ट, गो फॉर द बाय साइड। समझ रहे हो? यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, आई हैव मार्क ऑलरेडी फॉर नेक्स्ट एंट्री पर्पस और प्रॉफिट बुकिंग आई हैव ड्रॉन ओवर। ठीक है, ऊपर निकलेगा बाय, अगेन ऐड, डू अ पिरामिडिंग इफ आई हैव स्टॉक्स, अगर रिजेक्शन लेगा सेल देयर, प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल कैन गिव ए गुड मोमेंटम दिस वीक, कीप आई ऑन इट। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल कैन बी वेरी गुड स्टॉक फॉर दिस वीक, और बता रहा हूँ, कीप दिस इन माइंड। Let me check the CPR. What kind of CPR it is formed today? ये वाला डेट सबको याद है, आई हैव गिवन ऑन द आवर एनएससी ग्रुप कि भाई ये वाला स्टॉक कुछ तो था, स्ट्राइक प्राइस अराउंड 2000 नहीं 5400 300 पी समथिंग, आई हैव पोस्टेड ऑन आवर एनएससी ग्रुप।
द टारगेट विल बी, आई सेड स्टॉप लॉस विल बी 40, टारगेट विल बी 130 समथिंग. किसको याद है? ये टारगेट दिया ना, देखा नहीं दिया टारगेट? मैं पहले बोला था. हाँ, बोला था फर्स्ट टारगेट दिस, वो टूटा, नेक्स्ट सेकंड टारगेट दिस. ठीक है, लाइक सो. तो यहाँ पे देखो गाइस, अभी यहाँ पे देखो व्हाट काइंड ऑफ सीपीआर इट इज फॉर्मिंग. कौन सा सीपीआर है? क्या बोलोगे इसको? वीकली सीपीआर. नो, इनसाइड, इट इज नॉट ओवरलैप, इट्स इनसाइड सीपीआर. ओके, दिस इज इनसाइड सीपीआर. देखो इनसाइड में क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट मेथड टू एंटर. I can enter with the price action. What can I mark a trend line or a price action over there? One swing, second swing, third swing. It acts as our resistance level. Isn't it clear? Plus there is an CPR over there. So if any hourly candle sustain above the CPR, can I go for the buy side? Tell me. I cannot, I should not wait for this to cross. Okay, this is the specialty of the narrow CPR. Okay, if you're getting narrow CPR, compare the price action and plus candlestick closing confirmation, close देता है, go for buy side. But if price ऊपर होता, if price would have been upside, would have gone for sell side, isn't it? ठीक है. So as soon as I get types of CPR, I will add the points. ठीक है. तो एक पॉइंट मेरे को मिला अभी देखने के बाद कि भाई अगर नैरो सीपीआर है, सो इनसाइड सीपीआर है. ठीक है, तो इनसाइड में क्या करो, प्राइस एक्शन देखो कहां से बाहर रिजेक्शन हुआ है, उसके ऊपर क्या हाइवरटिकल सस्टेन हो गया, एंट्री मार लो. ओके, सो कीप आई ऑन द स्टॉक. इफ द एनी आवरली कैंडल सस्टेन above that the level is 5575, okay, you can plan for the intraday. Okay, but I will suggest for intraday use intraday CPR. Okay, you can go for a swing trade. Okay, till the target of at least this level. First target, after that you can see this level. ठीक है, डन है. देखो अभी बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मेनी स्टिल पॉइंट आर देयर, आई हैव टू ऐड इट अप, बट आई एम एडिंग स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर मैं एक साथ एक बार को ऐड कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट यूज ऑफ R3 R4 S3 S4. ठीक है, तो वो भी बताऊंगा बाद में. ठीक है, मैंने वो क्यों लगाया, व्हाट इज रीजन बिहाइंड. ठीक है, तो आप थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट को ऐड कीजिए. आर यू रेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? बस सब ऐसे हिला रहे सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. खाना खाया? हाँ. नहीं खाया? हाँ. भूख लगी? हाँ. सबको हाँ नहीं बोला. ठीक है, समझ में आया तो हाँ बोलना, वरना ना बोल. ओके, ICICI बैंक. सर इस सबसे में इशू इशू क्या आते हैं सर? क्या इशू है मुझे बताओ. रुको मैं लास्ट में अनम्यूट करता हूँ आपको. ठीक है, और क्लास पे रहना. ओके, आई विल अनम्यूट यू ऑन द लास्ट. मेरे को बताना. ठीक है, ICICI बैंक का सर आप देखोगे ना, देयर इज एन मोमेंटम. ओके, दैट इज देयर, बट इफ यू कंपेयर द सीपीआर, क्या है, असेंडिंग प्लस द वाइडर सीपीआर प्लस द ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर. अगर आपको यहाँ पे प्राइस मिलेगा, गो फॉर द बाई साइड. ये ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कल प्राइस अगर बाई चांस ये R3 क्रॉस कर देता है, ठीक है, अब एंट्री मार सकते. ठीक है, डन है. द टारगेट विल बी स्टिल सो मच पेंडिंग. ठीक है. हम्म, तो इसका मैं निकाल दूं टारगेट. चले मार्क द टारगेट. तो मुझे RRR में बहुत इश्यू होता है. अच्छा, RR मूवी देख के आए क्या प्रश्न? लुक एट दिस. हाँ, समझ गए, समझ गए. मैं ऐसे खिंचाई कर रहा हूँ. क्या सबको दिख रहा है? देयर इज इंपॉर्टेंट लेवल फॉर ICICI बैंक 61.8 एज पर दी और फिबोनाची एक्सटेंशन पार्ट. अभी देखो सबको मजा आ रहा है देख के, आफ्टर कंबाइन एवरीथिंग, कि आपको कहाँ पे परफेक्ट एंट्री चाहिए, कहाँ पे परफेक्ट एग्जिट चाहिए.
इफ यू वांट टू मेक ए फ्रेश एंट्री विच पीपल वुड हैव नॉट मेड, अगर किसी ने एंट्री नहीं मारा है फॉर स्विंग ट्रेड और फॉर इंट्राडे, क्या आप यहां तक वेट कर सकते हो चुपचाप? ठीक है, वो निकलेगा, एंटर, यहाँ पे पहला टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में तकलीफ क्यों आता है आपको बताओ। सो रोशनी मैम, आई विल अनम्यूट यू आल्सो इफ यू आर कंफर्टेबल टू डिस्कस योर प्रॉब्लम, चलेगा? तो पहले मैं किसको अनम्यूट करूं भाई, कौन था वो? Who was that? कौन था भाई सबसे पहले मेरे को, मैं बोला था अनम्यूट करूंगा पूछूंगा, कौन था? ध्रुव, ध्रुव था ना? ओके, हाँ ध्रुव सर। हेलो। हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू सर? फाइन। सर मैं ये बोल रहा था आपको, यस। जैसे कि मल्टी टाइप फ्रेम पे जब वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंट रो करते हैं अपन, हाँ सर। तो उसमें क्या है कि मुझे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंट दिखते हैं, आड़े टेढ़े ऊपर नीचे सब। ओके, ठीक है। तो इसमें वापस बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। देखो आप कौन सा भी अपना स्टॉक बताओ जिसमें आपको आधे आधे टेढ़े दिख रहा है, वो मुझे बताओ, मैं आपको जैसे उसी का। लास्ट टाइम मैंने उस गोल्ड में ड्रॉ किया था, गोल्ड में, फॉरेक्स में, एमसीएक्स में? एक्स ए यूएसडी में। अभी ट्रेडिंग में काम नहीं करा, क्या बात है। देखो इसमें हम बता आपको, आपके सामने में लेवल निकाल के बताता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखो। अब किसी को याद है, मैं एक बार प्रीवियस क्लास में बताया था, कौन सा वो पेयर, कौन सा पेयर बताया था, क्या वहां से सपोर्ट लिया हो? मेरे को तो याद नहीं है वो कौन सा पेयर था वो, लेकिन मेरे को प्राइस याद है, 142 141 समथिंग कुछ था उसका। देखते हैं उसके बाद। देखो भाई, इसका भी गोल्ड का भी देख लो, सेम सिनारी। देखो वीकली सीपीआर है सर, ठीक है? लगता है दूसरा निकल गए। नहीं नहीं सर, रेडी यही हूँ हाँ, मैं। हाँ यही हो ना, ठीक है। मेरे को थोड़ा हाँ बोलते हो तो मजा आता है समझाने में, ठीक है? तो देखो इसका भी सेम है, देखो अभी आपको पहले मैं दिखाता हूँ, इसको हटा दो, ठीक है? लेट मी रिमूव द सीपीआर, एवरीथिंग, ठीक है? सर मेरे को अभी देखना है मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ कि इंट्राडे कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, ठीक है? अभी स्विंग ट्रेड करता हूँ मैं, मंथली एक बार देखूंगा सर। यस सर। मंथली में देखो, देखो और कोई था, कोई पूछ रहा था, वो भी देख लीजिए सर, आपको भी यही दिक्कत था। तो आपको मालूम है, एज सुन एज वी आर गेटिंग मंथली टाइम फ्रेम, हमको मालूम है जो मैंने तरीका सिखाया हुआ है ड्रॉ करने का, दैट इज मैक्सिमम टचेस, राइट? यहां से मैं टच कर सकता हूँ, दिस होल एरिया इज इन माई रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? अगर मेरे को बाइक के लिए जाना है तो मेरे को कौन सा कैंडल है टू सस्टेन? डेली टाइप फ्रेम, नो डेली सर, का। दिस इज मंथली टाइम फ्रेम सर, देखो यहाँ अच्छा, पे वीकली। वीकली चाहिए मेरे को, तो आप हम्म। वीकली आ जाओ, ठीक है? तो वीकली में देखो कौन सा कैंडल सस्टेन हुआ है क्या सर? सस्टेन हुआ, यस। ऊपर गया, नीचे आ गया, हम्म। ठीक है? आना तो कोई दिक्कत नहीं, हम वापस देख ले कहाँ पे उसको हम लोग वापस एंटर मार सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं, कहाँ तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडर मंथली में क्या करते हैं, दे होल्ड फॉर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, राइट? सर ठीक वो है। ऊपर जो ऊपर जो पिन रहता है ना ऊपर वाला, हम्म, वो जो वो जो ऊपर छोड़ रखा आपने, तो हाँ। उसको कवर करना रहता है। नहीं देखो, हमको देखना है कि भाई मैक्सिमम हमको टचेस करना है, देखो क्या करना है ना, अभी ज्यादा विक से आए हैं, ठीक है? मेरे को हम्म। विक जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या टच किया है, यहाँ मैक्सिमम क्लोजिंग है, ठीक है? यहाँ पे हम्म। ओपनिंग क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग, तो मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे ज्यादातर मार्केट ने ऊपर जाके जहाँ पे क्लोज दिया ना, उसको थोड़ा हम्म। आप, तो आप टच करिएगा, क्योंकि इतना जरूरत नहीं, ठीक अच्छा। है? अगर विको इसको नीचे भी करूँ तो वो दिक्कत नहीं, मैं यहाँ तक भी करूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। ये भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है ना, ठीक है? ओके अभी सर। देखो, अभी यहाँ पे मैं सपोर्ट निकालता हूँ, ठीक है? सपोर्ट में क्या निकालू, अगर इसके बाद मैं सपोर्ट निकालू, यहाँ पे निकाल सकता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, यस। यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, राइट? ये मैं लगा सकता हूँ, ठीक है? अभी मैं आ जाता हूँ, वीकली आ जाता है, तो मेरे को मालूम पड़ गया भाई यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो क्या मैं वीकली में भी एक
सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ये हो गया मेरा नॉर्मल लेवल, ठीक है। अभी मैं डालता हूँ फिबोनाची लेवल, उसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखो कितने तरीकों से आप निकाल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या आपको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे 61.8 और 0.5 आपको दिख रहा है यहाँ पे फिबोनाची में? यस, यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट आएगा बाई आएगा, डिप आएगा बाई करो। ठीक है, अभी आता है डेली पे। अब देखो चीजों को, मतलब क्या आपको दिक्कत होता है? डेली पे कोई सपोर्ट दिख रहा है? कोई सपोर्ट नहीं है, एक ही सपोर्ट है यहाँ पे, इस ओनली वन सपोर्ट। ये एक ट्रेंड लाइन, अब यही सपोर्ट है डेली टाइम पे। ठीक है, घंटे में आ जाओ। अब 1 घंटे में इसने क्या सपोर्ट ब्रेक कर दिया है ना? क्या बोलते हो? यस। तो अब यहाँ पे, यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट पे आ जाओ। तो 15 मिनट के आप देखोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर खींचोगे तो ये भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो लाइक सो ऑन ना, वी हैव टू सी एवरी टाइम फ्रेम कि मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ। क्या मैं इंटरडे के लिए कर रहा हूँ, स्विंग के लिए कर रहा हूँ? जहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम आपको मिलता है ना, तो वहां तक आप थोड़ा निकाल सकते हो। ठीक है सर, डन है। इससे पहले ये स्विंग का आप थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो भी नीचे नीचे टूटता है, आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपको क्या करना है ना, टाइम फ्रेम चेक करो। ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम, लाइक सपोर्टेशन विल वर्क एज वेरी गुड। जो इंटरडे में आता है ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वो इतना अच्छा काम नहीं करता, ब्रेक हो जाता है। बट मंथली वीकली डेली जो लेवल रहता है ना आवरली का, बढ़िया काम करता है, उसको फॉलो करिए। उसके हिसाब से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, मैच द फिबोनाची लेवल्स, जहाँ पे जो मिलता है उसके हिसाब से ट्रेड करिए। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यूएसडी JPY, रोशनी मैम आर यू देयर? या ओके, किसकी उसको याद है मैंने बोला था यहाँ पे बाय करने के लिए? आई रिमेम्बर स्टिल द प्राइस, मेरे को अभी भी प्राइस याद है, 140 142 समथिंग, उतना ही था प्राइस। यूएसडी JPY यहाँ पे आएगा। लिया है मैडम सुमा रेड्डी मैम? ओके, वेरी गुड, बढ़िया। चल रहा है स्विंग में? आई यू हैव बुक्ड इट? चल रहा है स्विंग में ना? छोड़ दो उसको, पकड़ के रखो उसको, होल्ड इट टाइटली। ठीक है, अभी इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका लंबा जाने वाला है, लंबा रखो टारगेट। वेन एवर मार्केट ओके स्टार्ट फास्ट मोमेंटम टू अ डाउन साइड, ठीक है, सपोर्ट लेता है तो डबल स्पीड से ऊपर जाता है। ठीक है, डबल स्पीड से ऊपर जाएगा, तो उसको रखना। ठीक है, देन नाउ द मैम, हेलो मैम। Hello. हेलो मैम, बोलिए। Hi, sir. हाय मैडम, हाउ आर यू मैडम? Okay, wait, sir. I will send you picture. या मैडम सेंड। See, वेरी आर सेंड। ओके in message. ओके, Okay. So actually I'm confused कि इधर मतलब कि कितने क्वांटिटी आते हैं, ओके मिडल में कितने क्वांटिटी रहते हैं, टारगेट रहते हैं एंड स्टॉप लॉस रहते हैं, राइट? तो फिर मैं कंफ्यूज होती हूँ जब मैं बाई करने जा रही हूँ, तो फिर उसमें भी ट्रिगर प्राइस एंड उसमें भी ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस रहेगा नॉर्मल, एंड देन सेल करने जाऊंगी तो उसमें भी रहता है। तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एंड इसमें जो क्वांटिटी शो करता है मुझे वही पुट करना है या फिर अपने हिसाब से करना है, वो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखो आप ना इसमें पुट करना छोड़ दो। ठीक है, क्यों मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, सिंपल चीज है। आप जितने कैपिटल पर ट्रेड करते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया है, अगर 1 लाख है उसका डिवाइड बाई 1/4 करो। ठीक है, 25,000 रुपये आपके इसी मैक्सिमम आप डालोगे वन ट्रेड। ठीक है, फिर आप क्या करोगे ना, स्टॉप लॉस देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी। अभी मैंने यहाँ पे लगा, तो कोई भी ट्रेड बताओ, ठीक है, एग्जाम्पल बताओ। अगर मेरे को लॉन्ग करना है, ये यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं लगाता हूँ SL यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या यहाँ पे ओके। मेरे को, यहाँ पे लिखा हुआ आता है, पॉइंट्स लिखा हुआ आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को मालूम चलता है भाई यहाँ पे इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस को क्या करो, आप जितना आपने फिक्स किया है, लाइक लॉस को, फॉर एग्जांपल आपने लॉस पर कैलकुलेट दीजिए। वेट सेकंड में कैलकुलेट आता हूँ, समझाता हूँ। कैलकुलेटर अरविंद, कैलकुलेटर। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे को 3,000 का अगर मैंने लॉस फिक्स किया है, ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, 3000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉप लॉस। समझो यहाँ से लेके यहाँ तक समझो मेरे को 50% स्टॉप लॉस मिल, ठीक है मैडम, डिवाइडेड बाय, Yes. तो मैं कितना क्वांटिटी लूंगा मैडम, मैं 60 ही लूंगा, 60 क्वांटिटी लूंगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको करना है, आप क्या करो, सेटिंग में जाओ। आप यही बोल रहे हो ना कि सर यहाँ पे मेरे को समझ Yes, में नहीं yes. आता। तो यहाँ पे क्या होता है ना मैडम, देखो यहाँ पे लॉट साइज भी अलग है, ठीक है, रिस्क भी अलग है, तो आपको बार बार लॉट साइज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको इसका सिंपल रखो फार्मूला, द टोटल नंबर ऑफ लॉस यू कैन टेक डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन नंबर, आपको क्वांटिटी आ जाएगा। Okay, but sir, I'm confused कि जब हम बाय करने जाते हैं तो फिर ये सारे जो नंबर्स है इसको कैसे उसमें पुट करते हैं? I'm just confused in this. कौन सा नंबर पुट करना है आपको, I समझा नहीं mean, मुझे। आप बाय पे एक बार जाइए, मैं बताती हूँ। इस I पे mean, सेटिंग, इसमें जब हम बाय करने जाते हैं उसका एक अलग वो ओपन होता है, राइट? हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, मैं वापस हाँ। खोल देता हूँ, मैसेज है आपने भेजा है, आप यही बोल रहे हो ना। Yes, 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 yeah. ठीक है। तो इसमें टारगेट है, राइट? ऊपर हम्म रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में टारगेट है एंड हम्म स्टॉप लॉस है। हाउ कैन आई पुट हियर? सो मैं समझा नहीं, आपको क्या पुट करना है मुझे बताओ। मेरे को ये जो टारगेट है हाँ एंड स्टॉप लॉस है, ये मैं किस हाँ, में पुट करूँ? सेलिंग में करूँ कि बाइंग में करूँ, और कैसे करूँ? अरे मैडम आप बाइक कर रहे हो तो आप बाइक में टारगेट लगाओ ना, नीचे सपोज लगाओ, सेल कर रहे हो तो नीचे टारगेट लगाओ ना। अरे मैम रुको, मैं रुको, मैं सर जा रहा हूँ, वेट ए सेकेंड। देखो, अगर अगर आपने बाई कर रहे हो मैम, तो यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, यस। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मैं लॉन्ग कर दिया सब, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा, यहाँ रखूंगा, हाँ। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। यस, यस। ठीक है, अगर मेरे को लगता है टारगेट करूँ, यहाँ तक टारगेट टारगेट लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगर मेरे को शॉर्ट करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा शॉर्ट पोजीशन पे, अगर मैं ये वो टूटा, मालूम है मुझे। हाँ तो क्या पूछ रहे हो, अरे यार प्लीज मतलब इसमें जो नंबर शो, वेट, इसमें जो नंबर शो कर रहे हैं, लाइक मैंने इसको पुट किया यहाँ पे, ठीक है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस समझने के लिए। तो इसमें हाँ, जो नंबर शो कर रहे हैं, अगर मैं बाय करने जा रही हूँ तो उसमें मैं ये नंबर कैसे पुट करूँ? वो मुझे कंफ्यूजन है, बिकॉज मैं जब भी पुट करती हूँ तो ट्रिगर प्राइस से लेस एंड हाई ऐसा कुछ बताया, तो आई एम जस्ट अच्छा कंफ्यूज। आप बोल रहे हो कि आपके ब्रोकर में आपको हाँ, हाँ। समस्या आ रही है, समझा, सही है ना, अभी मैं सही बोल रहा हूँ ना, आपके ब्रोकर में आपको यस, सेलिंग यस। का टारगेट लगाने में आपको दिक्कत आ रहा हाँ। है, करेक्ट ना। यस। तो ऐसा बोलो ना मैम, सीधा सीधा भाषा में, सर ब्रोकर में मेरे को टारगेट ऐसा लगाना है, दिक्कत हो रहा है, वो दिखाओ कब कर। से मैं वही बोल रही थी। अच्छा ठीक है, अभी रुको मैं खोलता हूँ, ठीक है। देखो आपका आपको मैं खोल, देखो अगर आपने मैडम बाइंग किया है, ठीक है, अगर आपने बाई किया है, तो आप क्या हम्म। करो, एक्टिव पे जाके, ठीक है, आप एसएल लगा के छोड़ो। हम्म। देखो हमेशा कोई भी ऑर्डर में ना एसएल लगता है या फिर टारगेट लगता है, ठीक हम्म। है, आप दोनों नहीं लगा सकते। ठीक है, दोनों लगाते हैं, वो थोड़ा स्पेशल केस है, वो हम बोलते हैं जिगली ऑर्डर बोलते हैं उसको, हाँ, वो वो आप, जीटीटी आता है। हाँ वो नहीं मीन्स करना मैं आपको, बाय कर लूँ, ओके, मैं बाय कर बाई लूँ, कर, बाद में मैं जीटीडी में जाके उसको मॉडिफाई कर दूं। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, अगर आपने बाई किया, आपको डायरेक्टली टारगेट पे लगाना है, तो क्या करना, आप लिमिट में जाके जो भी आपका प्राइस है, आप क्लिक करो। लिमिट पे ओके। आप कैसे क्लिक करोगे, समझो यहाँ पे 215 किया, ठीक है, यहाँ पे हम्म। 215.1 एक ज्यादा रखो। ओके, ओके। ठीक है, अगर आपने ओके। बाई किया है, स्टॉप लॉस लगाना है, एसएल पे आओ, ठीक है, यहाँ पे 215 है, तो यहाँ पे 214.95, 5 पैसा कम करो। ओके। ठीक है, अगर यस। आपने सेल किया है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको लिमिट पे जाके जो भी आपको स्टॉप लॉस है सेम टू सेम लगाना। ठीक है, ओके। लिमिट पे जाके लगाना स्टॉप लॉस, सेल सेट आपने किया है। ओके। ठीक है, सेल सेट में अगर करने हैं, आपको टारगेट लगाना है, एसएल में जाके क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली आपको लग ओके, जाएगा। मैं एक बार ट्राई करती हूँ, तो ओके। आप लाइव मार्केट में एक बार ट्राई करो, नहीं हो तो मेरे को पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके देन गाइस, सी यू, आई हैव टेकन 15 मिनट एक्स्ट्रा टुडे, मैंने ओवर टाइम कर दिया है। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, सी यू ऑन वेडनेसडे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, आई विल टेक केयर, बाय बाय। Why not tomorrow? Why not tomorrow means tomorrow I am not taking class. I am giving a 1 day gap to you people to learn. ठीक है, सुधांशु सर, ओके,
You have to learn the things. If I keep on going, how will you understand? So I got the concept, but sir, please reconfirm setting indicator. Sir, go to indicator section. ठीक है? Come to, आप क्या कर रहे होते? फिर आप सो रहे होते हो जब स्टार्टिंग बताता हूँ नहीं सर? अब लास्ट में पूछते हो. Look at this. Once I am showing CPR with pivot levels by गोमती शंकर. ठीक है? आपको वहां पे जाना है. जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे. Go for setting. Setting में जाकर you have to go for input first. Disable everything. Just enable show weekly pivots. Show weekly previous high and low. ठीक है? 2 पॉइंट को क्लिक करना है. Then come to style. Disable everything. Just enable weekly pivots 3 point. Okay, pivot PCTC. Then R1, R2, R3, S1, S2, S3. Then come to downside, previous week high, previous low. That's it. Okay, that is an weekly CPR we have covered so far. So on Wednesday, I will cover a monthly CPR. Okay, how to combine monthly, weekly, and daily and initiate the trade, everything together. Okay, done है? Okay then, bye bye. Yeah? मिलते हैं. Done. Vinay sir, got it? My point? Okay ना? Okay.